अभी अगर टेक्नोलॉजी कुछ चीजें कर रही है तो अभी भी बहुत चीजें कर रही जो टेक्नोलॉजी नहीं कर पा रही है. आई नो विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देयर इज अ रेस, but there will always be the need for well educated problem solving individuals who can read, understand and find solutions to the situations that we face day to day, whether as engineers, whether as doctors. No matter how much medical science or technology takes swift advances forward, the multifaceted approach is very important. The path to grow on the job opportunities, the opportunities people get. I don't know whether there is as much. I used to hear the word apprenticeship when I was young. Abhi, wo internship, yeah, it may be used like that, but apprenticeship and learning on the job, being guided by someone who knew, who faced the problems and is taking. I'm not talking for only, as Mr. Chaudhary said, for few. I'm talking for the large number of people who need to have skills, for ready to have the skills for taking up whatever the country is progressing in, even to get on any kind of factory jobs or laborers or whatever, but there is a certain level that is needed. And whether it can be done through some basic education, apprenticeship, skilling is the important part. And the third point, I'll just finish. And the last part is the societal attitudes that need to change in society. Society needs to change that that awareness, the impact on on impact on the mindsets. Is only government job the right kind of job to take? Is that the only way to have economic security? Or I can do other things as well. Can becoming a tradie, why is it looked upon? Where is the dignity of labor? So government has a limited number of jobs. No matter how much competitive exams we do, it is still a limited number of jobs. What are the other opportunities that are available? Higher education enables vast population, but there needs to be suitably trained for the jobs. So tradies, community colleges, and dignity of labor. I think this area of mindset also contributes to having access and to moving towards prosperity, to be able to live your own life. I'll stop here. Thank you, Divyangana. Yeah. Thank you so much, ma'am, for your enlightening views. And we are very well versed with the art of storytelling and how stories resonates better than any book. And you told everything in the way of 3 stories, and it definitely resonated with us. And what you said, that education stands by you, I think that is everything, because that is all we need. And we need a multifaceted approach to education. As you said, it is absolutely correct that education is not only about literacy rates, who can read and write. It is about skill development to make the youth employable rather than just providing them with employment. So yes, ma'am, we completely agree with your views, and thanks a lot for your enlightening views. So with this, I would like to invite our next panelist, Dr. Ashok Parekh. Over to you, sir. Thank you. I think जो प्रीवियस पैनलिस्ट ने जो विचार अपने रखे हैं उनको सुनने के बाद, और जो हमारा आज का चर्चा का विषय है माइंडफुलनेस एजुकेशन, यदि हम इसको देखते हैं तो जो मेरा अभी तक पिछले 15 साल का स्टेट लेवल का एक्सपोजर है, इसके पहले मेरा स्कूलिंग का एक्सपोजर है, उससे जो मुझे समझ में आया है कि जैसा कि फर्स्ट पैनलिस्ट ने कहा था कि जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में गए उस समय हमारी नीड थी स्केल अप करने की, नंबर ऑफ स्कूल्स बढ़ाने की। हमने उसको इस तरीके से लिया कि विद इन 1 किलोमीटर प्राइमरी स्कूल हो, विद इन 3 किलोमीटर अपर प्राइमरी स्कूल हो, विद इन 5 किलोमीटर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल हो। पर सिस्टम कैपेबिलिटी को कहीं हमने देखा नहीं कि सिस्टम की कैपेबिलिटी क्या है, क्या सिस्टम इतने नंबर ऑफ स्कूल्स को फीड कर सकता है, क्या हमारे पास इतने ट्रेंड टीचर्स हैं
जिनको हम देकर के उस एजुकेशन को हम एज पर फिलॉसफी, एज पर हमारा जो पॉलिसी है, हम उसको कंडक्ट कर सकें। तो एक तो यहाँ बड़ा एक मेजर गैप आया है कि नंबर ऑफ स्कूल्स बढ़ गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम हमने रजिस्टर्ड करने की कोशिश की, और हमने एक अपने आप को डेटा के अंदर तो हमने अपने आप को टॉप में ले आए कि हमारे 90%, 95%, 99% बच्चे रजिस्टर्ड हो गए। पर स्कूल के अंदर क्लासरूम प्रोसेस में क्या हो रहा है? क्या टीचर उन बच्चों पर प्रॉपरली अटेंशन दे पा रहा है? क्या टीचर को उस तरह की प्रॉपर ट्रेनिंग है? क्या उसके पास वो रिसोर्सेज हैं जो उसे चाहिए? उस पर हमारे सिस्टम ने ध्यान नहीं दिया। मतलब आप देखेंगे कि किस तरीके से स्केल अप हुआ है एजुकेशन सिस्टम। एक प्राइमरी स्कूल था, उसको हमने इसको प्रमोट किया, अपर प्राइमरी में प्रमोट कर दिया, देन पॉलिटिकल फिर वहां नीड आई कि नहीं साहब इसको हाई स्कूल किया जाए, हमने उस मिडिल स्कूल को हाई स्कूल कर दिया। टीचर वही है, रिसोर्सेज वही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जा रही है, उसके कारण जो एक मोमेंटम जो होना चाहिए था एजुकेशन का, जिस तरीके से लर्निंग होनी चाहिए थी, वो ना होते हुए केवल हम एक रिचुअल्स के रूप में काम करने लगे। वहां एडमिशन हुआ, क्लास लगी, एग्जाम हुआ, और फिर आ गई हमारी राइट टू एजुकेशन कि हमें कुछ नहीं रोकना है, और बच्चे आगे प्रमोट होते चले गए। एक चीज तो ये है देखने की। दूसरी चीज है माइंडफुलनेस की बात है, क्योंकि वो डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर, लर्निंग एटमॉस्फेयर है या नहीं। क्लासरूम एटमॉस्फेयर किस टाइप का है? क्या वो प्रिंट रिच है? क्या टीचर और बच्चे के बीच में संवाद होता है? क्या शिक्षक बच्चों को समझ पाता है? बच्चे शिक्षक को समझ पाते? क्योंकि दोनों के बीच जब तक संवाद नहीं होगा, चर्चा नहीं होगी, तब तक वहां गिव एंड टेक की बात ही नहीं हो पा रही। वहां केवल एक टेक्स्ट बुक के साथ वो दौड़ लगा रहा है कि मुझे कोर्स कंप्लीट करना है। बच्चे ने उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, नहीं किया, कितना समझा, नहीं समझा, और वो तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आज हम देख रहे हैं, बहुत बड़ा एक हमारे पास जो लैक ऑफ स्किल वाले जो बच्चे हमारे पास बहुत सारे पहुंच गए हैं। इवन यदि आप हायर एजुकेशन में भी देखेंगे तो जितने इंजीनियर्स हमने प्रोड्यूस कर दिए हैं, उनकी क्वालिटी क्या है? तो हम क्वांटिटी में तो हम बढ़ते चले गए, बाकी क्वालिटी में हम बहुत पिछड़ गए। हम शायद उन स्कूलों से भी ज्यादा पिछड़ गए जो हमारे किसी पेड़ के नीचे लगने वाले स्कूल थे, या किसी सरपंच के मकान के अंदर लगने वाले स्कूल्स थे, जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, पर टीचर के पास टाइम था, बच्चों से बात करता था, बच्चों से साथ बैठता था, उनको समझता था, और उनके साथ वो लर्निंग एक्टिविटीज कंडक्ट करता था। बच्चे पार्टिसिपेट करते थे, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग होती थी, उनका अपने कंटेंट के ऊपर जब वो काम करते थे तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के साथ काम करते थे। माइंडफुलनेस के लिए जरूरी है कि उसके अंदर एकाग्रता हो बच्चे की, क्योंकि यदि आप, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत अच्छा कोट है। उन्होंने ये कहा था कि यदि मुझे दोबारा जन्म मिलता है और मैं फिर से स्कूल यदि जाता हूं, तो मैं सबसे पहले अपने आप को कंसंट्रेट करने पर फोकस करूंगा। यदि मैं अपने आप को कंसंट्रेट कर सका तो मैं बहुत कुछ सीख सकता हूं। आज कंसंट्रेशन के लिए बच्चे को उस पर्टिकुलर लर्निंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने के लिए टीचर के पास टाइम नहीं है, या टीचर के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं डिफरेंट टाइप के जो बच्चे मेरे पास है उनको मैं कैसे कैटर करूं, उनको किस तरीके से इन्वॉल्व करूं। और ये मैंने पिछले 15 सालों में काफी कुछ महसूस किया है। और इसके बाद एक अच्छा प्रोग्राम हमारे पास था, वो था शाला सिद्धि। क्योंकि अभी तक हम एजुकेशन सिस्टम में हम देखते हैं हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से क्वालिटी को डिफाइन करता है। क्वालिटी का कोई एक स्ट्रक्चर कहीं नहीं था। ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात होती है, कोई कंसंट्रेशन की बात करता है, कोई कैपेबिलिटीज की बात करता है, कोई इन्वॉल्वमेंट की बात करता है, परंतु कहीं ना कहीं एक डिफाइंड एक मिनिमम कॉमन
एक स्ट्रक्चर हमारे पास हो जो डिफाइन कर सके कि दिस इज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। और वो आया शाला सिद्धि के बाद, जिसमें 7 डोमेन्स 46 स्टैंडर्ड्स आए। और जब इसको लेकर हम टीचर्स के पास गए और टीचर्स से जब बात किया कि देखो ये आपको अपने स्कूल के बारे में खुद को डिसाइड करना है, आपको सेल्फ असेस करना है, देन हम जो है एक्सटर्नल असेसमेंट करेंगे, और फिर आप अपनी नीड के हिसाब से अपने स्कूल के प्रोग्रामिंग को आप डेवलप कीजिए, डिजाइन करिएगा और उसको एग्जीक्यूट करिए। किससे सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और आई थिंक उसके इतने बढ़िया रिजल्ट्स हमारे आए कि कुछ स्कूल्स इतने अच्छे डेवलप हो गए जिनको हमने चैंपियन स्कूल्स कहा, टीचर की अंडरस्टैंडिंग बन गई और वो आज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन के हमारे सिस्टम में काम कर। Excuse me, sir. Sorry to interrupt, but could you please sum up in a minute so that we can have an... Okay. तो आई थिंक कि माइंडफुलनेस एजुकेशन के लिए जरूरी है कि टीचर स्टूडेंट को समझे, उसके पास इतना समय हो, उतने संसाधन हो, और वहां उन दोनों के बीच एक रियल अंडरस्टैंडिंग के साथ यदि एक समझ बनती है, सीखने के प्रोग्राम्स को डिजाइन करके और उनके साथ स्थापित करने के लिए जो भी प्रोसेस वो स्टार्ट करे, चाहे वो लैंग्वेज में करे, मैथमेटिक्स में करे, या वो को-करिकुलर एक्टिविटीज में जाए, गेम्स में जाए, जहां भी जाए, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग यदि टीचर के साथ है या जो भी उसको सपोर्ट कर रहा है उसके साथ है, तो बच्चा उससे सीखता है। क्योंकि बच्चे तभी सीखते हैं जबकि उनको एक भयमुक्त आनंददायी वातावरण कक्षा में मिल जाए। तो आई थिंक यदि हम इसको लाने की कोशिश करेंगे तो माइंडफुलनेस एजुकेशन देने में हम सक्षम हो जाएंगे। थैंक यू। Thank you so much, sir, for your knowledge and your views. And sir, I think what you said is completely true, because we as Indians have been quite obsessed with quantity as of now, and that at some level the quality has been compromised. So as ma'am earlier said, that it is just not about the literacy rates, it's about the quality of education. So yes, sir, how much time we give to people, how much time teachers take out for the students, that is all that matters. So thanks a lot, sir, for your views. So with this, I would like to invite our next panelist, Dr. Sajjan Singh Shekhawat. Over to you, sir. Thank you, Divanjana. Thank you, sir. मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो प्रॉब्लम को अगर आइडेंटिफाई कर लें हम, तो शायद हम पॉसिबल सॉल्यूशंस की तरफ भी जा सकते हैं। मैं रेफर करना चाहता हूं कि 2017 का जो असर का डेटा है, बियॉन्ड बेसिक, हम नॉर्मल असर करते हैं और एक ऑड ईयर में हम लोग बियॉन्ड बेसिक हम करते हैं, जिसमें हमने 2017 में बियॉन्ड बेसिक असर सर्वे किया था। उसमें हमारा एज ग्रुप था 14 to 18। इस यूथ के साथ हमने कुछ जानकारियां ली और उनके कुछ नंबर्स लिए। तो अगर हम ये देखते हैं कि ये अभी कहाँ हैं, 14 से 18 साल के बच्चे कहाँ हैं, तो मैक्सिमम बच्चे स्कूल में हैं, पर फिर भी 14% चिल्ड्रन ऐसे हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं। पर जैसे ही हम लड़कियों की बात करते हैं तो ये नंबर डबल हो जाता है। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम इक्वलिटी नहीं ला सकते, हमारी लड़कियां काफी इसमें पीछे रह गई। तो जो हम एक साथ होलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अटक जाती है। दूसरी बात हम करें कि वोकेशनल ट्रेनिंग या कोर्सेज किस तरह के हो रहे हैं, कौन कर रहा है, तो वो नंबर केवल 5% है। तो बहुत कम नंबर है, क्योंकि सभी को सैलरीड जॉब चाहिए और सभी जगह सैलरीड जॉब होंगे सबके लिए, ये संभव नहीं है। जो भी अभी तक बातचीत हुई है उसमें भी निकल कर आ रहा है, और हम भी जानते हैं कि हमारे पास इतने सारी जॉब नहीं है। तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग भी कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, पर ना वो लर्निंग कर रहे हैं, ना वो प्रोडक्टिव हैं। वो खेती में लगे हैं, एक्सेस ह्यूमन रिसोर्स लगा हुआ, लेकिन प्रोडक्शन सेम है। कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के जो उनका प्रोडक्टिविटी है वो नहीं है। हमने इस सर्वे में एक सिंपल सा सवाल पूछा था। हमने एक ORS का पैकेट बच्चों को दिखाया, और जिसपे कि सारी जानकारी लिखी होती है, उसका यूज कैसे करना है, उसकी प्रोडक्शन डेट होती है, उसकी एक्सपायरी डेट होती है। और हमने पूछा कि इसको कैसे बनाते हैं, कब कितना कंज्यूम करना है, कब कंज्यूम करना है, इसका एक्सपायरी डेट क्या है। सरप्राइजिंगली ओनली 54% चिल्ड्रन कुड आंसर। चिल्ड्रन यानी यूथ हमारा जो भी है। बाकी बच्चे दे कैन रीड बट दे कांट कॉम्प्रिहेंड। तो जो पढ़ रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक सिंपल सा सवाल और पूछा था हमने घड़ी दिखाई, तो साधारण जो 9 o'clock 6 o'clock आसानी से सबने पहचान लिया।
जैसे 8:45 किया, 10:10 किया, तो उनको प्रॉब्लम होने लगी। तो ये बेसिक चीजें भी अगर नहीं आ रही हैं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। राइटली अशोक साहब ने कहा था कि हमें क्लासरूम सेटिंग्स पर काम करने की आवश्यकता है। हमें वहाँ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा जहाँ डिस्कस कर सकें, क्रिटिकल थिंकिंग हो, एनालिटिकल स्किल्स वहाँ डेवलप हो, बच्चों से बातचीत करें। मैं एक छोटी सी स्टोरी पे बात करना चाहता हूँ। आप सबने सुनी होगी, कालिदास और राजा विक्रमादित्य के बीच में एक डिस्कशन होता है। दोनों नोबेल हैं, दोनों बातचीत कर रहे हैं कि उन्होंने कहा, विक्रमादित्य जी ने कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, कवि हैं, गुणकार हैं, लेकिन अगर आप थोड़े सुंदर होते तो अच्छा होता। कालिदास जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा अगले दिन मैं आपको बताता हूँ। और गर्मियों के दिन थे, तो अगले दिन उन्होंने मिट्टी की सुराही को सोने की सुराही से चेंज कर दिया। और बातचीत के दौरान उनको प्यास लगी राजा को, तो उन्होंने कहा कि पानी दो। और जैसे ही पानी दिया तो उन्होंने फेंक दिया बर्तन, कहा कि ये इतना गर्म पानी। और जैसे ही उन्होंने उठाया तो देखा सोने की सुराही है। तो उन्हें कौन बेवकूफ था जिसने मिट्टी की सुराही को सोने की सुराही से रिप्लेस कर दिया? तो कालिदास जी ने कहा कि मैं था वो। और ये सब डिस्कशन हो रहा था मेरी एक क्लास में, जहां मैं चौथी क्लास के बच्चों के साथ काम कर रहा था। तो स्टोरी एक तरफ है, लेकिन मैंने बच्चों को स्टोरी के बियॉन्ड जो रेगुलर टिपिकल सवाल होते हैं उसके अलावा सोचने की बातचीत करी उनसे कि क्या होता। लेट्स से कि राजा उसको फायर कर देता, उसको पनिश कर देता, तो क्या होता। तो एक चौथी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची ने, हार्डली वो बहुत छोटी उम्र है, उसने मुझे एक बहुत सटीक जवाब दिया। और उसने उस दिन मेरा भी वे ऑफ थिंकिंग बदल दिया कि देखिए, वो उसको सजा दे सकते थे, उसको कुछ बाहर निकाल सकते थे, लेकिन अल्टीमेटली वो राजा इतना नॉलेजेबल तो जरूर था कि उसने ऐसे आदमी को अपने दरबार में रखा हुआ था। तो आफ्टर सम टाइम ही कुड हैव रिफ्लेक्ट कि उनको बुलाना चाहिए, मेरे से थोड़ा गलती हो गया है, पर वो एक एप्रोप्रिएट पर्सन है। तो ये जो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जब हम बात करते हैं बच्चों को, इस तरह से हम लोग उनको मौके देते हैं, तो वो जरूर निकल कर आते हैं। वहां कोई लिमिट नहीं है। हम अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते कि बच्चों को ये नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए। हम डिफाइन नहीं कर सकते। और आज के जमाने में टेक्नोलॉजी ऐसा टूल है जिससे हम, हमारा जो ज्योग्राफिकल रीच है, क्योंकि हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन गांव में रहती है, हर 10वां व्यक्ति हमारा जवान व्यक्ति है, तो अगर उस तक पहुंचना है तो हमें देखना पड़ेगा कि हम कैसे पहुंचे। तो टेक्नोलॉजी एकमात्र टूल है। अब देखते हैं कि एक्सेस क्या है। तो हर एक के पास एक फोन है, हर एक के पास इंटरनेट है, और उसकी एबिलिटी भी है। वो फेसबुक चलाता है, वो यूट्यूब चलाता है, वो इंस्टाग्राम चलाता है, वो ऑनलाइन शॉपिंग करता है, वो फूड डिलीवरी के लिए ऑर्डर करता है। तो ये अगर चीजें पहले से बैकग्राउंड में हमारे पास है, तो क्यों ना इसी मीडियम को इस्तेमाल करके, जो रेणु जी कह रही थी कि छोटे छोटे स्किल्स हम लोग कैप्सूल्स बना करके ऑनलाइन कोर्सेज करें। फर्स्ट एड एक मामूली सा कोर्स है, वो बहुत आसानी से डिलीवर हो सकता है। वो मदर्स के लिए भी यूजफुल है, वो यूथ के लिए भी यूजफुल है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। बैंकिंग की जहां तक बात है, वो भी अपने आप में सीखने वाली बात है। बहुत सारे लोगों के पास अकाउंट खुल गए हैं, लेकिन बैंक में जाकर डिपॉजिट करने वाला परसेंटेज बहुत कम है। आज की डेट में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो तेजी से ग्रो हो रही हैं। फूड इंडस्ट्री बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। फैशन इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। हेल्थ केयर में बहुत सारा स्कोप है। हॉस्पिटलिटी में बहुत सारा स्पेस है। तो क्या हम इनके छोटे छोटे कैप्सूल्स बना करके, हम जो एनईपी अभी कह रहा है कि 8वीं क्लास से आना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली वहां स्कीम है, स्कीम थी, स्कीम होगी, पर क्या इसके बियॉन्ड कोई दूसरे मीडियम से जो हमारा स्केल है, जो ज्योग्राफिकल हमारा स्केल है, उसको हम रीच कर सकते हैं क्या? क्योंकि जब तक हम लोग एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप नहीं करेंगे, जब तक हम अवेयरनेस को नहीं बढ़ाएंगे, नॉलेज नहीं बढ़ाएंगे, स्किल नहीं बढ़ाएंगे, किसी टेक्स्ट को नेगोशिएट करने की एबिलिटी नहीं डेवलप करेंगे, तब तक हमारा जो प्रॉस्पेरिटी वाला रोड है वो ब्लॉक रहेगा। तो हमें इस पर काम करने की आवश्यकता है। तो डेफिनेटली हम आने वाले समय में इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। थैंक्स। Thank you so much, sir, for your views. The information you shared with us, the ASA report, was definitely very enlightening for us. That if we are focusing on holistic approach to education, then why are girls and women still left behind? And you talked about vocational training, that only 5% is the scope for vocational training. So I think that is probably because in Indian culture, in Indian system, we want white collar job, we want salaried jobs, we want jobs that will pay when the rest of the world is suffering. In the times of recession, we have witnessed huge layoffs. So we are obsessed with white collar and salaried jobs.
So yes, sir. And you talked about that सिर्फ account खुलवाना is not the right percentage to measure development. Deposits कितने हो रहे हैं? So that is a new way, a new approach to look at the bigger picture. So thanks a lot, sir, for your views. So with this, I would like to invite our next panelist, Mr. Manoj Nigam. Over to you, sir. चलो, थैंक यू दिव्यांगना। तो मतलब सज्जन ने, पारिक जी ने और पहले के पैनलिस्ट ने काफ़ी सारी चीज़ें बोल दी हैं। और आज मैं याद करना चाहता हूँ 4 साल पहले आज के ही दिन को, जब देश में लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी। और लॉकडाउन के बाद क्या हुआ, किस तरह का असर हमारे ऊपर पड़ा, किस तरह का असर हमारे बच्चों के ऊपर पड़ा। हाँ, वो सब जो भयावह जो दिन थे, जो महीने थे, जो साल थे, वो हमको हमेशा याद रखना चाहिए। हाँ, और खासतौर पे ये जो हम बात कर रहे हैं कि माइंडफुल एजुकेशन की, आज के दौर में तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है। जहाँ तक मैं कहूँ कि एकलव्य की बात करूँ, तो पिछले 40 सालों से एकलव्य एक तरह से माइंडफुल एजुकेशन पे ही काम कर रहा है। हाँ, तो यदि हम शुरुआत में बात करें और एकलव्य की फिलॉसफी की बात करें, तो हम लोग शुरू से ऐसा मानते हैं, जो कि एक कहावत में भी कहा गया है कि मैंने सुना भूल गया, मैंने सुना भूल गया, मैंने देखा याद रहा, और मैंने करके देखा समझ गया। तो एकलव्य जो है वो एक तो नाम से ही आप देखिए कि एकलव्य की जो कहानी थी कि उनको उनके गुरु ने शिक्षा देने के लिए मना कर दिया, और एकलव्य ने खुद करके ही अपनी तीरंदाजी की शिक्षा ली, और उसमें वो एक तरह से सबसे अच्छे धनुर्धर बने। कुल मिला के यदि देखें, और जो आप लोगों का थीम भी है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल की यदि बात करें, और यदि हम देखें कि भारत में लगभग 70% आबादी जो है वो ग्रामीण इलाकों में रहती है। और पारिक जी सही कह रहे हैं कि वो स्केल अप करना और जिसमें सरकारी सिस्टम में काम करना, हर बच्चे को शिक्षा पहुंचाना एक ही मुश्किल काम रहा है, और उसमें एकलव्य और प्रथम जैसी संस्थाएं पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। एक किसी ने कहा था, मैंने पढ़ा था कि बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो आबादी है, अभी मान के चलिए 130 करोड़ से ज़्यादा ही है। हाँ, तो यदि हम मान के चलें कि हमारे पास 130 करोड़ दिमाग हैं और 260 करोड़ हाथ हैं, 260 करोड़ हाथ को यदि हम शिक्षित और कुशल कर दें, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा। तो यदि हम वापस एकलव्य की तरफ आते हैं, और एनईपी और नए संदर्भों में भी कहा जा रहा है कि कौशल विकास हो सके, इस बुनियाद पे हमको काम करना चाहिए, और ये केवल कॉलेज के स्तर पे जाके नहीं। जैसे मैं अपनी बात करूं कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तब वहां जाके मैंने कुछ इंजीनियरिंग टूल को या साइंस के एक्सपेरिमेंट्स को हाथ लगाया। जब स्कूल में थे तो हमको केवल दिखाया जाता था कि ये माइक्रोस्कोप है और ये वर्नियर कैलिपर से, हमको हाथ लगाने की मनाही थी। हमको किताबों पे आपको लाइब्रेरी में हमको ले जाते थे, किताबें इशू करते थे, लेकिन घर ले जाने की मनाही थी। हाँ, लेकिन बदलते दौर में बहुत सारी चीजें जो बदल रही हैं, और हम लोग इसी तरह से काम कर रहे हैं। और एकलव्य का जो होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम था, वो यही बच्चों को अवसर देता था कि बच्चे अपनी आसपास की चीजों से कुछ हाथ से कुछ कर पाएं, कुछ देख पाएं, कुछ सुन पाएं, अपने अवलोकन कर पाएं। तो माइंडफुल एजुकेशन कुल मिला के यही तो है ना, कि हमारी जो इंद्रियां हैं हमेशा जागरूक रहें, है ना। हम अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं तो बेहतर ऑब्जर्व कर पाएं, हम कानों से सुन रहे हैं तो उसको बेहतर ऑब्जर्व कर पाएं, अपनी त्वचा को देख पाए, हम अपने आसपास की चीजों को देख पाए। तो एकलव्य जो है कुल मिला के अनुभव आधारित शिक्षा को प्रमोट करता है, चाहे वो बच्चों की बात हो या शिक्षा की बात हो। या बीते सालों में कई ऐसे हजारों संस्थाएं बनी हैं और उनके कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग देना है। तो हम लोग हर तरह से काम कर रहे हैं, सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं, संस्थाओं के साथ सहयोग कर रहे हैं।
दूसरा, अभी क्लासरूम स्ट्रक्चर की भी बात हुई, तो आमतौर पे आप लोगों को मैं एक उदाहरण देता हूँ कि हम लोग जब भी बैठते हैं तो हमारे बीच में कुछ टेबल कुर्सी नहीं होती, या क्लास में भी जब हम बैठते हैं तो बच्चों के बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता और एक गोल घेरा बना के बैठते हैं। इसका मतलब, बहुत मतलब बच्चों को रहता है कि टीचर और बच्चे के बीच में जो संवाद है वो बराबरी का होता है। आमतौर पे यदि किसी भी स्ट्रक्चर को हम देखें तो एक तरह से टीचर जो है वो बोर्ड खड़े हुए हैं, वो सुप्रीम है, और सब बच्चे जो हैं वो सुन रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर को तोड़ने की भी बात है कि जब हम बात कर रहे हैं बच्चों की और माइंडफुलनेस की, तो ये हमें बहुत जरूरी है इन सब चीजों पे बात करना। दूसरी चीज जो एकलव्य ने इतने सालों में काम किया है और देखा है कि बच्चों की जो अभिव्यक्ति है, मतलब बच्चे बहुत अच्छे तरह से अभिव्यक्त करते हैं, और हम समाज में कि बच्चा यदि कुछ बोल रहा है तो हम उसको डांट देते हैं कि यार चुप हो, बाद में करना, ये करना, वो करना। बच्चे बहुत कल्पनाशील भी होते हैं, बच्चे बहुत कौशल भी करते हैं कि जैसे मान लीजिए अरविंद गुप्ता हमेशा कहते हैं अपनी कहानी में कि कोई परिवार यदि कोई खिलौना लाता है तो माँ बाप को ये डर रहता है कि बच्चा खिलौना नहीं तोड़ दे। तो आमतौर पे होता है कि खिलौना जो है वो ऊपर रख दिया जाता है और बच्चा जो है वो डब्बे से खेलने लगता है, और आप देखिए कि बच्चा डब्बे से खेल के कितना खुश होता है। तो एक तरह से वो कौशल उसमें विकसित हो रहा है कि हम किसी भी चीज से इतना बढ़िया तरीके से अपने कौशलों को विकसित कर सकते हैं, और यही उस बच्चे की सोच को भी डेवलप करता है। तो कुल मिला के एकलव्य का जो काम है कि स्थानीय परिवेश में विकसित करना, मतलब ये जो विज्ञान के बड़े बड़े उपकरणों से जाना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, वो ठीक है कि समय के साथ ये करना चाहिए, लेकिन अभी भी बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं, सज्जन जी से भी मैं बोलना चाहूंगा कि ठीक है, टेक्नोलॉजी है, डिजिटल है, जिससे हम स्केल अप कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो अनुभव है उसमें अभी भी मतलब डेटा में यदि जाए तो हो सकता है कि 130 करोड़ लोगों के पास में फोन हो, लेकिन हकीकत में जाके देखा जाए तो जब हम कोविड के दौरान डिजिटल एजुकेशन पे बात कर रहे थे तो बच्चों के पास में ना डेटा था, ना मोबाइल था, और यदि मोबाइल भी था तो पेरेंट्स की हालत ऐसी थी कि उनके पास में रिचार्ज करने के पैसे नहीं थे। तो कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो शिक्षा हम आमने सामने दे सकते हैं, जिसकी कोशिश करना चाहिए, जो सरकार भी कोशिश कर रही है ना कि हर शिक्षक जो स्कूल में पहुंचे, है ना, ये बहुत जरूरी है। और स्कूल में पहुंचने के बाद इतनी तमाम ट्रेनिंग होती है, और टीचर जो है एक बार क्लास में गया तो उसके ऊपर कोई अधिकारी, कोई प्रेशर नहीं होता, उसको जो करना है वो कर सकता है। तो एक तरह से टीचर्स की भी हम लोगों को उस तरह से ट्रेनिंग करना पड़ेगा कि तमाम प्रेशर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसमें उनको भी थोड़ा संबल दे पाए। दूसरा, यदि माइंडफुल एजुकेशन की हम बात कर सकते हैं कि could you please conclude? Actually, we have a time. Yeah. ठीक है। तो मैं अपनी आखिरी बात जो करना चाहता हूँ कि हम स्थिति को या परिस्थिति को बदल नहीं सकते, लेकिन हम मुश्किल परिस्थितियों में अपनी प्रतिक्रिया को जरूर बदल सकते हैं, और यही माइंडफुल एजुकेशन हमको सिखाती है, चाहे वो कोविड की बात हो या बच्चों के एग्जाम की बात हो। और एक आखिरी डेटा के साथ में मैं बंद करता हूँ, जिसमें कि हमको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है हमारे देश को, कि हैप्पीनेस इंडेक्स जो आप लोगों ने देखा होगा कि अभी 136 देशों में से हमारा नंबर 125 पे है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, हमारी जैसी तमाम संस्थाएं और उभरें, और हम सरकार के साथ में रहकर देश के सारे बच्चों तक पहुंच पाएं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, sir, for such knowledgeable opinion and words. So, sir, you said that we should focus more beyond the classroom teaching. We should focus more on learning by doing. That was the Eklavya model, and I think that's what we should be focusing, and we are focusing right now. And it is absolutely true that we cannot change the situation, as you said. We can change our the way we handle the situation, and it is not just about teaching or educating the youth or students. It is also about skilling and upskilling of teachers. So yes, sir, I completely agree with whatever you just said.
And thank you so much for sharing such useful information with us. So Thank with you. this, yeah, thank you, sir. So with this, I would like to invite our next panelist, Mr. Sana Srivastava. Over to you, sir. Yeah, thank you, Devagana. Devagana, honestly, I'm asking, do we have time? Like it's Yes, sir. No issues. We just started 5-10 minutes late, so yes, we have time. okay. I'll take 2 minutes only because since we are running No out of problem. time. Yeah. And yeah, first of all, thank you, BSS College for inviting me for this discussion, and all the respected dignitaries, guests, and the panelists. And thanks to Dr. Shumaila ma'am for giving this opportunity to speak in front of 30-40 students and the panelists. And I'm also feeling having a pleasure of sponsoring this event as a prime sponsor from Ecoholics. I just want to tell two things, or maybe three, from the perspective of the students, because a lot has been already spoken about mindful education. But I just want to tell the students about the real world experience, because since I'm into entrepreneurship, and I'm also feeling very proud since I'm an alumni of BSS College as well. In 2014, I passed out from BCom Computers. Later on, I started doing this and that, and you all are aware about that. So I'm not going into that. But since last 10 years after college, I can say that once you passed out from college, you will be in the Pacific Ocean without a boat. This you will feel, and that is where the mindfulness comes into the picture, because that is where you need your mental stability. You need a strong mindset in order to survive in this world, because after college you'll have the pressure, which is, I can say, 360-degree pressure you will feel from your home, from teachers, from the market itself, and from within. So in that scenario, I would like to recommend three important things to keep in mind, which is very, very vital in order to succeed in any field, not in economics, in any field. Since I'm running 7 businesses along with Asabri, 7 businesses in 7 different fields. So I cannot say it's restricted to economics only, but as an employer of 100 people currently, it's 117 approximately. I would like to say in the morning itself, I've taken one interview. She was also from BSS College, luckily, and I had to speak to this as well. I would say one thing is, whatever you have studied in college doesn't matter much in real life. What you can extract from your college studies is very important. Like on your CV, if you have written, I have a leadership skill, like Divyangana in front of me, and I have interaction, like I can see. So if someone asks Divyangana, tell me any real life example where you can prove that you have leadership skill. These kind of activities will help you. This is what I did in BSS College when I was there. I did ramp walk. I played All India University. कुछ साल तक बोर्ड पे नाम भी था. अब I think वो बहुत पुराना हो गया तो हट गया. Then मैंने पढ़ाई भी करा, जीके क्विज भी किया. मतलब in college आपको जो opportunity है वो करो आप. Don't go for achieving high percentage. For example, I want to achieve 90% score, 95%. Like 12th से जब आप compare करोगे तो आपका growth down ही होगा college में. एक semester 2, 3, 4, 6 आप देखोगे growth will decline. But growth other areas में होना चाहिए. What are the other areas? Like you can stand up and speak for 2 minutes. Okay, you can address someone, and like she is doing all other, because she got the opportunity that I'm taking her name only. But these are the very important things. Second is soft skills. If you don't know how to talk to the people, like talking to your colleague is different, talking to your junior is different, talking to your senior is different, and talking to the senior people, like in panelists that we have, very experienced people, is different. So you should know that what you are trying to do. And the third and the last thing is, my dear students, don't think limitedly, because we are living in the information age. I've taken one webinar, I think 2 years back in your college only. Shumaila ma'am invited me. I'm telling the repeated things again. I'll take 1 more minute only. Before Industrial Revolution, I hope all of you have heard about it, Industrial Revolution 1760. It was agrarian age. सिर्फ दिन में काम होता था, रात में काम नहीं होता. Then Industrial Age came.
and it was 24/7 factories were working. So world output doubles. But in 1989, World Wide Web invented, Tim Berners-Lee. And since 1989, we entered into information age. Now, in India, it's like different region is at different timeline. I think Mr. Sajjan will let you know more because he's working on the ground and what I heard him about education. So कुछ एरियाज हैं जो 5 साल पीछे हैं यूएस से, कुछ एरियाज हैं जो 25 साल पीछे हैं, कुछ एरिया 20 साल पीछे. So there's a difference. So on the same lines, think from that perspective that you are in the information age. Industrial age में क्या होता है मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ. एक जॉब रहती थी, रिटायरमेंट तक वही जॉब करते थे. Now people are not ready to do a job even for a year. एक साल में बोलते हैं ग्रोथ नहीं है. They don't know meaning of the growth. कि ग्रोथ क्या नहीं है. Growth that turns into monetary. And secondly, अगर उनके thought कोई है तो that is in terms of skills and learning something. तो मैं आपसे ये कहूंगा कि choose your career wisely, not in terms of monetary. I know monetary is important, money is important. If someone say कि money is not important to me, तो बोल दूंगा आपका सारा पैसा भी मुझे दे दो, है ना. तो money is important, ये honesty है सब में. But the second thing is very important is about what you are learning. Okay. तो इसका ध्यान रखो. We are into information is there's abundance of information. Now it's what not to read is more important than what to read. So there's a lot of information. आपको क्या करना है, pick and choose. And the second thing, what is important is money is renewable. आज आप खर्च करोगे अगले बार फिर आ जाएगा. If you attended something to upgrade your skill, वो फीस आपकी वापस आ जाएगी. If you get that particular job or if you start, but time is non-renewable. So make sure you are very picky with your time. That's why I asked Divyanga कि 4 बज गए. So इसीलिए I am very picky with my time. I do not write my bank statement. There are accountants for it, but I write in this diary about my time, what I did. So 3 to 4 is like BSS. That's everything written. So as a student, if you do this, you'll be very successful. Thank you so much once again. Thank you so much, sir, for sharing such important information with us. And more importantly, it was more relatable than, to us. Since we are final year students, as you said that after college, it is like a Pacific Ocean. You are in a Pacific Ocean without a boat. So that is what we feel right now. And we can definitely relate to that. That if we are going somewhere for employment, it should not be our marks sheet or our CV which should reflect our personality, but we ourselves should be able to reflect what we have learned in the 3 years or 4 years of college. So yes, sir, thanks a lot. Thanks a lot for letting us face the reality. Thank you so much. Thank you, Devangana. And just one more thing I would like to announce. If any one of you, because you all are my junior, any help required, 10 number पे मेरा office है, Shumaila ma'am ने देखा है. Just come, fix a day, and I'll address all of you. Okay? Sure, sir. Yes, sir. We definitely, need some guidance, and also we'll definitely reach out to you. Thanks a lot. Thank you, sir. So with this, I'd like to invite our next panelist, Ms. Asawari Savarikar. Over to you, ma'am. Thank you so much, Divyangana. A very good evening to all the delegates and respected panelists over here and all the students. This is going to be a very heart-to-heart conversation, as Sanat has just mentioned, that it's all about time. So I will also make sure that it's a timed conversation so that you all do not get bored as well. Many think that mindfulness or mindful education is just like a spiritual activity, but I believe it's not only a spiritual or a philosophical activity. It's a very core responsibility of every human being. So if we want to understand it, let's first decode what is mindful education, especially for all the youngsters over here. To understand anything, let's understand the opposite of it. What is opposite of mindfulness? Mindlessness, or let's say being oblivious, completely unaware of your surroundings, your career, your options. And now I genuinely believe that none of the students, no person over here and anywhere else would be heedless, mindless, and ignorant about their careers, their choices, their future. Obviously not. Which leads us to a single understatement that mindfulness or mindful education is definitely the one thing that leads to economic prosperity. Because money is necessary but not a sufficient condition for having good life, happiness, and wisdom.
So it's completely wrong to think that economic prosperity is just the function of money, which usually youngsters think. Even I was when I was in post-graduation, even I used to think like that. But it's not. It's much, much deeper to attain besides money. Being mindful generates that kind of aura or energy within us so that we can move towards economic prosperity. Coming to the second step of it, when we teach, for example, I'm an economist mentor. So when we teach economics, we study about scarce resources to be put to most judicious and efficient utilization. We teach them decision making and the problem of choice. So we are actually learning to live with the least and produce the most. So it's somewhere ingrained in us that, by using the least, that is our mind, our intuition, our energy, our healthy body, our awareness about the surroundings, we can generate the most, which is materialistic and realistic prosperity, whether it's economic prosperity or it's social prosperity or it's any type of prosperity. Let me give you a small example of mindful education and how it works. So students usually, even in the field of economics and even elsewhere, fear of mathematics, trigonometry, geometry. Why? Because they do not understand how this is going to be used by them in the real world. हमें कैसे use होगा real world में? Now they would often ask, this कि मैं तो chef बनने वाली हूँ, या I'm going to be a baker. So how does sine, cos, theta, integration, log prove the right angles are the right triangle? How it's going to be utilized? Now, if I want to be a chef or a baker, I will not be using mathematics. It's a wrong theory. Why? Because almighty, of course, ask a pastry chef कि एक आधा चम्मच बेकिंग सोडा अगर नहीं डाला तो केक नहीं फूलेगा, or specifically for any type of course that is present, So mathematics in general is thought to be like utilization of that subject to a specific course. Engineering में काम आता है, science में काम आता है, इसमें काम आता है, उसमें काम आता है. No, it is actually there to sharpen our intuitions, to refine our ideas, to improve our life. It is much more important than any other subject as such. So fearful or being fearful will only contribute to being mindless technically, and which is why, metaphorically speaking, back in the day, people had better sense of direction than us today with all the technological aid that we have in our hand. Now comes the bigger question: how mindful education will lead to economic prosperity. Simply speaking, for all the students, hear me out very vividly, very intently, that ability to focus on one thing at a time for an extended period of time is a skill that you have to master, and it needs practice. क्यों? क्योंकि ऐसा होता है ना that there are multiple thoughts running in our minds. पहले gym जाना है, oh no, because I have some other thing to do at home. I have to stay at home. No, but I also have to get ready for the office. Oh no, but I also have to attend to a certain call. Oh, but I also have to surf through the Instagram. Oh, but एक YouTube पे reel भी बनानी है. There's so many things, and it's like a trap. But when we talk about mindful education, it's not only to focus, it's actually paying attention to your own self, as one of the panelists and all the other panelists actually try to say the same thing, that you have to be able to feel your emotions like pain, fear, anger, frustration, and still not be reactive. You don't have to react to anything. You have to be responding to it. That's what aims to be mindful education. I'll give you a very small example to conclude my talk with. Is whenever you want to, as a student, as an aspirant towards any career option, if you want to really look out for mindfulness in yourself and aim towards prosperity, economic prosperity, then just go in front of the mirror and just for a minute try to introduce yourself to yourself. Just try to introduce yourself. What have you done? What is your name? What is the meaning of your name? It's as simple as that in some of the interviews which students fail to explain. And that's where the whole thesis of this mindful education comes into picture. So this is where I draw my line. And thank you so much for
giving me this opportunity. Thank you. Thank you so much, ma'am, for such an varied take into the information, because we have been you've been talking about how mindfulness, we can inculcate mindfulness, but you talked about the only thing we need to fear about is the fear of mindlessness. We need not be mindless, because if that happens, we need to refine our ideas, we need to improve our life, because if we stop improving, as Abdul Kalam once said, that at any point when you stop reading, when you stop refining yourself, you are dead. So I think that's exactly right. And you talked about the fear of mathematics, fear of econometrics. You answered my question of 3 years, that why do we study mathematics? What is the use of mathematics? So yes, it is everywhere. It is in every aspect, every part of our life. So thank you so much, ma'am, for such an interesting take on the question, and for enlightening us with your views. Thank you, ma'am. So with this, we'll move to the question and answer round. We will just take 2 questions as the time has already elapsed. So we'll just take 2 questions. First question is by Jasleen Singh. What is the link of domestic markets and economic prosperity? So any panelists who would like to answer the question? What is the link of domestic markets and economic prosperity? Divyangana, I think it's better that students do write the name of the panelist. Yeah. Or either you allot or you ask Jasleen or anyone, those who are asking. Just write the panelist name as well, so that it will be better. Sure. So Jasleen, could you please specify to whom would you like to ask your question? So the next question is by Urmeet, who says that how mindful education leads to growth and development of the country. So I think that's what we are talking about in the whole discussion itself. And I think every panelist has addressed this question. So the next question is by Shivanshu Mishra, who asked his house. So Jasleen said she would like to ask a question to Ashok sir. So Ashok sir, would you like to answer what is the link of domestic markets in economic prosperity? I think he's left, or some network issue. Okay, no issues. So the next question is by Shivanshu Mishra, who asks, how is a mind's development, or we can say a student's development, is based on mindfulness? I think Sanat sir would be the right person to answer how a student's development based on mindfulness. Yeah, Shivanshu Mishra said Sanat sir. Okay, so I'll answer in short, since you are taking only 2. So how is the mind's development, or we can say student's development, is based on mindfulness? I think first of all, you have to get a clarity in mind. And what I teach to my freshers as well, the clarity is essential. If you do not have clarity in mind what you have to do and what it should not be. So Shivanshu, if you are a cricket fan, I can give an analogy to cricket. If you have seen MS Dhoni, and he has, so MS Dhoni has a clarity in his mind. If you have seen his days of captaincy, I'm not talking about his cricketing skills, but captaincy. So clarity is very essential. On the same lines, if you see the president of USA, Barack Obama, he also has the clarity in mind whenever he was taking any decisions. So I think first of all, we all make decisions and we all make wrong decisions. Like right now, you know that Ecology is a successful venture, successful company, giving thousands of results every year. See, one thing is you don't know about the failures that I faced. And that those failures that you will see or you will listen when you sit with me for like at least 6 to 8 hours, then I'll be able to tell. So always remember that when you take decisions, there will be mistakes, there will be wrong decisions. Just take the learning and move on. It's always remember that whatever we have done yesterday or we did yesterday, it was the hard work of the days before that. So whatever we'll do today, it will be the outcome of, or it depends on the tomorrow's outcome. So again, it's a similar kind of thing. Whatever you give input in your mind that I want to be this XYZ in career, see once, like what that, suppose for example, you want to become an economist. So as an economist, what they do, see their day-to-day activities. People come to me and say, sir, I want to prepare for PO, probationary officer in bank. I want to prepare for IAS, Indian Administrative Service, Indian Economic Service.
RBI. What they do? Do you have any idea? No, you just have seen classmates are preparing, or you have seen some pay scale, and that's why you have started preparing. So mindfulness will come, Shivanshu, when you have the clarity in mind. Okay. Thank you so much, sir. I hope, Shivanshu, this answered your question. So we would like to take one more question, that is by Palash Maurya. Does New Education Policy 2020 play an important role in mindful education? So he has not named the panelists. So I think anybody who would like to answer this question. I think Asavri would be better in New Education. Asaf? Sure, I can again give a small information about it. Yes, if we talk about the new education policy, even the draft and the finalized version of new education policy, it has primarily two very interesting things that can be seen as a direction towards mindful education. The very first thing is vocational skills being very integrated towards different colleges. So every college, every university now has to specifically go for a certain incubation center for vocational skills, which will definitely make students aware about not just hard skills like your core courses, but soft skills like spoken English, communication, computer science, etc., etc. Second thing also which is interesting is homeschooling, which is quite interesting take for Government of India, because we are not from that culture, but we had a certain culture of homeschooling if we talk from the Vedas. So which is why this again is a very interesting take, where a student does not develop only in a school for 4 hours, 5 hours, but has been given like an opportunity for the whole 24 hours of development, which which will lead to mindfulness for that particular candidate, and definitely bring about economic prosperity. So yeah, these two things are very interesting, which are a part of mindful education. Thank you so much, ma'am. Yes. So I think we are done with the discussion. Thank you so much, sir and ma'am. Just a minute. So I would like to thank our panelists, Professor S.N. Chaudhary, sir, Ms. Renu Seth, Dr. Ashok Parekh, Dr. Sajjan Singh Shekhawat, Mr. Manoj Nigam, Mr. Sanat Srivastav, and Ms. Asavri Savarikar for taking out the time to grace us with their presence. It would indeed be an understatement to suggest that we learnt a lot from your knowledge and experience. You made us realize that the purpose of studying economics is not to acquire some ready-made answers to economic questions, but to learn how to start finding those answers through mindful education. After all, economics is about creating a win-win situation. With this thought, I would like to officially end our Samvad 2023, organized in collaboration with Pratham, powered by Ecoholics, India's largest platform for economics, co-powered by Mahatma Gandhi Institute for Civil Services and DXN International. Thank you all for joining. I would like to again thank all our panelists for gracing us with their presence. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thanks a lot. Thanks. Thank you. Thank you. You all are requested to leave the meet, please. Thank you.